So what we'll do today is we'll move to next step or next point where once we do the data understanding or let's do with that only step. So suppose you are given with the HR related data set. म्हणजे तुम्हाला HR related HR चा एक data set दिलाय, right? This is a data set. Okay. ये किसी कंपनी का data है. See it here. So I want you to give me some insights whether how we can optimize or just a second. Uh, I guess this is just points are there. Give me a second. This file, what we are going to see is, oh, sorry, it has a filter. Okay, very good. So this is data. This is your data, and you need to give insights on this. As a data analyst, आपको ये data set दिया गया है. So can we? What is the first step? As in, what you should do whenever you get a data? Yes. So let's understand the data then. So this is a first name, right? First name, last name. मतलब ये किसी employee का data है. So some name with Arav and Sharma last name. Initials, Arav कुछ लिखा है initials. Then the department. Okay. Department के बाद we have a grade and then total experience. मतलब जो भी experience उनको है, they can tell here a total experience. And then experience as a manager. मतलब if he is previous job में वगैरह कहीं पे भी और in your company if the person is a manager तो उसका experience अलग से लिखा है, right? And this is the gender and then ये क्या है CTC, right? Cost to company, maybe you need to give me the number, but and this is date of joining, right? And then we have a date of birth. Very simple. Mostly HR में इतना ही data रहता है और apart from this you can maintain any other records, leave वगैरह, or if you have any other records that you can maintain, right? So date of joining is price tag. Yes. So what we'll see is you can see the date of joining is something different, right? Okay, not an issue, but we'll start understanding why each and every column is there, and then we can come to the that point. But good observation. So why do you think then first name, last name obviously सबको रहता है, initials? Why do you think some initials are maintained? कुछ इसका relevant आपको है? Do you have any idea? Okay, mostly you have not. Anybody has anyone experience? Like, sorry, as in, has anyone worked in the corporate online? आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो यू शुड बी एबल टू कोरिलेट वो इनिशियल्स क्यों मेंटेन कर रहे हैं. यस, for calling the name of the employee. Okay, that is possible, but in case our it's the same name, but what if I mention initials as AS then, or ROS, something like that, I can maintain initials. So just to, okay, it's for a creation of email ID. If you see any company email ID, it's a mostly combination of name or surname के दो letters, right? और name का कुछ part or starting one letter. So उसके लिए they might have maintained the initials, right? Fair? So you can mention a Sharma at the rate something something.com, right? So maybe that can be one of the possible reasons why they have created initials. But that much information, you know what is the understanding, a basic understanding, that's enough. The next department, so in which department the person works, then the grade.
So what is grade and why we are maintaining grade? Yes. Grade is hierarchical. Okay. Yes. Online. Why we maintain grade or why the grade data is there? Okay. So do you, because in company you will have a hierarchy, right? Salary grade. Okay, possible. Salary grade or hierarchy, assistant manager, or some developer. So you start with the entry level, then you get promotion, right? Then you become manager, lead. So all those designation will give a grade. G1, G2, G3, or related to salary also, because depending upon your grade, your salary will be decided. It's not the random number anything they will say, but it's just a relation between your work or your designation, your hierarchy in the company, and also related some they have maintained, right? Then total experience. Can you quickly tell me what is this total experience means? So items, right? So hope you are. But how did you conclude this is a month and not year? 24 years of experience is possible, right? Then how did you, but you can say 50, 52, 50. This is bit doubtful. You are not sure, right? So you need whether it's really a month or a year. Not an issue. Whatever data we have, we can confirm. Then this experience as manager. So what is the month, year? These are Okay. So this can be a month because you don't see values. But we need to check, not an, it's not immediately you need to conclude. But only thing is you need to remember this units are important, not only numbers, whether it's year, month, or whatever the units, those are important, right? Then this is gender, and then CTC. You can see the city, right? Here some. So this CTC is or per month. What do you think? looks like Okay, per month, right? And can you see the number? Some different, like just a number. There is no. Okay, not an issue here. This is of joining. Date of joining is the date on which the person is joined, right? But if data clear picture, some random numbers are here in the date of joining. Column says date of joining, but below some values are there. So is it a mistake or what it is? Or किसी को आइडिया है ऐसा क्यों आ रहा है? मतलब So date for formatting issue. date of okay. joining the salary. नहीं नहीं, date of joining. You are seeing date of joining some different numbers, right? Date of joining के time पे salary होगा वो salary. नहीं नहीं, why the numbers are different here? Date of joining. It should be date, right? Date of joining, date. Then you are seeing some random. Different types of Okay. And how do you, like, why this happened? मतलब ऐसा क्यों हुआ? एक्सेल में है, दिस इज एक्सेल एंड दिस इज अ डेटा आपको मिला है कंपनी से. सो यू आर चेकिंग डेटा, अंडरस्टैंड कर रहे हो, कॉलम अंडरस्टैंड किया, देन उसके भी लाइक वॉट एवर डेटा इज देयर, यू आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट एंड यू फाइंड सच कॉलम्स हियर. डेट ऑफ ज्वाइनिंग में कुछ नंबर्स लिखा है. सो व्हाई डू यू थिंक दिस इज, पहले तो ये बताओ ये पॉसिबल है या नहीं है, और आपको लगता है मैंने क्रिएट किया है? सर उसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा. Yes, right. So we'll understand what is data type. Okay. पहले तो ये डेटा टाइप चेंज क्यों हो रहा है फिर? ठीक है, आपने बोला डेटा टाइप चेंज करना है, करेंगे, बट क्यों चेंज हो रहा है? ये ऐसा आ क्यों रहा है? व्हाट इज द रीजन?
सर वो डेट के ये फॉर्मेट में नहीं है, बताओ। जनरल में है। Yes, okay. We understood date format is not there, but how this date format came, as in number में क्यों आ रहा है? Any idea? Okay. Not sure. Salary तो अलग कॉलम है, date of joining अलग है. ऐसे क्यों डेटा आ रहा है? Any guess? ओके, भाई कल हमने डिस्कस किया था, कोई भी आपको डेटा देता है तो वो लोग क्या हाथ से इंटर करते हैं क्या? तो कहाँ से आता है डेटा? सोर्स क्या है इस डेटा का? कोई सिस्टम रहेगा, राइट? ईआरपी, सिस्टम सिस्टम एसएपी जनरेट। हमने डिस्कस किया था, राइट? और नहीं तो एसक्यूएल का सर्वर रहेगा। तो जब भी आप डेटा कॉपी होता है किसी भी सिस्टम से, एसक्यूएल हो, एसएपी हो, एंड देन एक्सेल में आता है, दोनों एप्लीकेशन अलग अलग है, राइट? सो वहां पे जो डेटा टाइप मेंटेन किया है वो डेटा टाइप एक्सेल में है, ये पॉसिबल नहीं है, राइट? एसक्यूएल में बहुत सारे डेटा टाइप्स है, सच एज डेट है, डेट एंड टाइम है, और कुछ रहेगा, varchar है, एन varchar है, राइट? सो ऑल दोस थिंग्स आर, इट्स नॉट नेसेसरीली कि सारे सिस्टम सारे डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है। So what is the best, or what Excel does is it try to create whatever is best possible, as in जहां से वो डेटा आ रहा है उससे कोरिलेट करके, मतलब Excel try to manipulate that data, जो Excel में अच्छे से दिखेगा वो डेटा टाइप रखेगा। And this issue mostly of arises when you copy paste the data, मतलब कई वेबसाइट से आप कॉपी कर रहे हो टेबल और पेस्ट करोगे तो आपको ये इशू आ सकता है, राइट? So this issue is this issue comes when you try to copy the data from different source. Excel to Excel copy है तो not an issue, but understand why this is happening. Then we can say data type है, वो है, whatever the step we are going to follow, but understand ये क्यों आया है, right? जब भी आप SQL का डेटा और एसक्यूएल से एक्सेल में डेटा डंप करोगे, और पाइथन में पांडास का डेटा है, we have a command called pd.tocsv to excel, तो pandas जब भी कन्वर्ट करता है तभी भी ऐसे ही कुछ एरर्स आ सकते हैं, क्योंकि पांडास में जो डेटा टाइप्स है सच एज सीरीज, डेटा फ्रेम, वो एक्सेल में नहीं है, राइट? सो यू नीड टू बी बिट केयरफुल कि क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज हैपनिंग, राइट? So then date of birth, next column. As you understood the data, whatever the column is there, the next step is called data formatting, right? आपको अभी like ऐसा garbage, or what we say, not a garbage, but you cannot uh, find it based on some numbers, right? Date of joining का कुछ insights निकालना है आपको, तो you cannot keep such data, और ऐसा नहीं कि ये गलत डेटा है इसीलिए डिलीट कर दिया। रेस्ट एश्योर्ड, मतलब ये प्रॉपर डेटा है, बट हाउ टू हैंडल सच टाइप ऑफ डेटा, we come to the next step called data formatting. First step is data understanding, the next step is data formatting. तो जब भी आपको कोई भी डेटा है तो try to make it as clean as possible। मतलब क्या है, एक्सेल के जो डेटा टाइप्स है उस डेटा टाइप्स में आप उसे अप्लाई कीजिए, so that you can, आप इस पे इजीली मैनिपुलेट, और डेटा यू कैन, कैलकुलेशन फास्ट होते हैं उससे जब भी आप डेटा फॉर्मेट करते हो, एंड यू विल गेट सम ऑटोमेटिक रिजल्ट्स, एज इन करेंसी है, डॉलर है, उससे रिलेटेड सारे कैलकुलेशंस ऑटोमेटिक हो जाते हैं। सो लेट्स डू देन हाउ टू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल, this can be a text, right? And so how to set this, I will करते हो, and you have option right click के बाद right, there is option called format cells, दिख रहा है सबको? And then you select this, आपको एक नया ओपन हो जाएगा बॉक्स, एंड इन दिस बॉक्स you can select the category. These are nothing but a data types. You can see there is a number, currency, accounting, date, time, percentage, scientific कुछ calculation है तो वो, text, spatial, custom. So all these are different data types available to you, so that you can format your data properly.
have one more thing called home tab. Whenever you click home tab, आपको ये ऑप्शन दिखता है यहाँ पे. See this option. This number. Here also you can, this option also you can use it to format the text. So data formatting के लिए ये menu आप use कर सकते हो. Okay? Clear? So let's do then. Let's do then I will get the table, right click for cells, and then what should I select here? Some text is there, so I'll select the text and okay. So it gets converted into a text column, right? So similarly I can do for name. Initial number or text का combination है, तो it becomes a custom, something related to custom, or you can put it as a general. But जहाँ जहाँ भी text दिख रहा है आपको, you can convert. So then format cells, and same steps we are going to follow in Python as well. मतलब ऐसा मत समझिए कि इसका यूज क्या है, बट इन रियल वर्ल्ड पाइथन में भी यही फॉलो करोगे आप. यू विल लोड द डेटा, डेटा क्लीनिंग, डेटा फॉर्मेटिंग, ये सारे स्टेप्स इसी में आते हैं, राइट? सो इफ यू वांट टू क्लीन द डेटा, फॉर्चुनेटली मतलब सारे फील्ड्स we have a data, there are no null values, but if you are null values, then this is the step at data formatting में आपको रिमूव करना पड़ेगा null वगैरह. ओके, चलो. तो यहाँ पे टेक्स्ट आएगा. then next initials and department, I can select all and then right click, format cells, select the text, press OK, right? Then grade, you can make a custom if you want, or you can use a general, whichever is suitable. General is there. If you want to build a custom, there are different formats. See, all these formats are there. You need to understand one by some. Hash is related with numbers, currency, ये देखिए dollar, right? You need to select appropriate column from here. If you have some time related, DDMMYY, बहुत सारे formats है अलग अलग. So you need to select based on your requirement. This is the time. HH means hour, minutes, AM, PM, right? DD-MM, मतलब date and month. All those formats, depending upon your requirement, you can select. Currently, I will keep it as a general, right? Then year of experience. So I can use from here, right? At the top, I can select the number like this. But ये number is not for me, na? Experience 0.00. So I want to make it a whole number, not a decimal number. So इसके लिए I have more option. Can you see here? This is called precision. By using this, we can adjust precision. Clear? Sorry, कम करना चाहिए. So let's select complete. Then radius, right? ये हो गया meaningful, right? Clear? Then by the way, मैं जो select कर रहा हूँ ये, I'm click करके drag कर रहा हूँ, right? Somewhere around 51. So do you think real life में ऐसा ही करना होगा आपको? और what do you think कि इसमें 10,000 रोज है और 1,00,000 रोज है, तो कैसे करना है फिर? ऐसे ही करते बैठना है क्या? मतलब क्लिक करो और कंटिन्यू ड्रैग करो 10 मिनट 15 मिनट ऐसे, then No, sorry. Use the shortcut. yes, absolutely right. You need to use some shortcuts. Shortcut मतलब पहला सेल सेलेक्ट करो,
शिफ्ट कंट्रोल, उससे क्या होता है, पूरा डेटा सिलेक्ट होता है आपका। ओके, क्लियर सबको? एंड देन अभी जो आपको फॉर्मेटिंग करना है, तो यू कैन फॉर्मेट, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल। If you want to make it text, select on the text and press OK, right? Then CTC, CTC को क्या फॉर्मेट करना है अभी? So पहले तो सिलेक्ट करो, बताइए सिलेक्ट कैसे करना है? कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो, उसके बाद राइट क्लिक, देन फॉर्मेट सेल्स, then what select here? Number? Okay, why not number? Okay. Okay, so why not number online? Why not number? Because it's amount. Yes, sorry. Can you repeat? Sir, amount. Okay, this is amount, so that's why you should use a currency. और आपको सैलरी में पैसा मिलता है कि नंबर्स मिलते हैं? अकाउंट में व्हाटएवर मैसेज आपको मिलता है दैट इज अ नंबर, बट इन रियल वर्ल्ड में क्या मिलता है आपको? पैसा मिलता है कि नंबर मिलता है? Then it should be currency, right? So don't make a number, नहीं तो एक पेज पे वो 10 लाख रुपए लिख के आपको दे देगा, नंबर है ना अल्टीमेटली। So try to be at least whatever आप कर रहे हो इससे कोरिलेट कीजिए रियल वर्ल्ड से, because it will make lot of difference. Okay, चलो, so make it a currency here, and then उसके अलग अलग formats है. If you have some symbols, decimal point तो decimal point, किसी को डॉलर में चाहिए तो डॉलर में भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट यू कैन चूज. एंड देयर आर फ्यू मोर ऑप्शंस. मान लीजिए निगेटिव आपको नंबर दिखाना है तो यू कैन मेक इट ओनली रेड, मतलब सिर्फ रेड नंबर से दिखेगा, और यू कैन पुट माइनस साइन एंड नंबर और माइनस साइन एंड रेड. some different formatting related options है. Those who are into accounting and all, they need credit and debit. क्लिअर दिसेल ना, जर क्रेडिट ब्लॅक मध्ये असेल, डेबिट रेड मध्ये असेल, सो दे कॅन कोरिलेट. सो फॉर अस नॉट अ बिग डील, विल यूज अ डिफॉल्ट ऑप्शन. ओके, सो प्रेस एंटर. सो नाउ इज इट प्रॉपर? आपका सीटीसी सैलरी सब कुछ क्लियर है, दिख रहा है प्रॉपरली? सो देन नेक्स्ट विल बी डेट ऑफ ज्वाइनिंग. So date of joining has some different format. So what we'll do, select the cell. कैसे करना है? Shift Control right click. अभी बताइए date of में क्या रहता है? So what select here? There is a date, right? So select the date. Keep a default format if you want. So there are a lot of formats available. अलग अलग format है. आप कौन सा client, whichever client you are using, depending upon that आपको करना पड़ेगा यूज, बिकॉज यूएस में इंडिया फॉलोज DD-MM-YYY फॉर्मेट, राइट? बट यूएस में उल्टा रहता है, MM-DD-YYY. पहले मंथ लिखते हैं फिर डेट्स लिखते हैं वहां पे, राइट? सो अकॉर्डिंगली आप whatever the requirement is there, you can select the style here, formatting. So I will keep it default, press OK. Can you see now date of joining, proper date of joining? Clear? Data अभी proper दिख रहा है? Okay. So next is then again shift control down arrow, right click, format cells, date already formatted, press OK. By the way आप यहाँ से भी set कर सकते हो, not a big deal. So there is a time, long time, short time. See, short date, long date, time, percentage. Accounting is the people who are from commerce, debit, credit, उसके हिसाब से that will change. You will have some different notation. जब भी बैलेंस शीट में देखोगे, they don't use minus sign, they use brackets. तो उससे रिलेटेड आपको कुछ एडवांस फंक्शन चाहिए तो that you will find it in the accounting and all.
currently for us these things are enough. Okay, so once the understanding is complete, formatting is complete, now next important thing is let's find out the insights then, right? क्योंकि next logical steps you need to find out some insights and then उसके basis पे आपको कुछ actions define करने हैं, right, for the organization जो भी जिस company का data है उसके ऊपर. So what we can do is जो हम that we can use. So who can tell me what is the total CTC और company का कितना खर्चा हो रहा है? Total जितने भी employees है उन सबको if I take a sum of this CTC, this is nothing but my expense of the company, right? मतलब इस महीने सैलरी के लिए कितना खर्चा हो रहा है all the employees का, that I can find it out. So that can be one of the insights आप बोल सकते हो. What I will do is equal to or go to formulas, insert sum. अभी यहाँ पे some other function formula. So formulas, insert function sum, right? Now sum function I have selected it here, sum, enter. Then you can mention or select all the cells. You use shortcut as well, not an issue, right? Press enter. Okay, so देखिए, did I set a currency here? तो वो करेंसी ऑटोमेटिक आ गया. कल सिर्फ नंबर आ रहा था और इफ यू ऑब्जर्व हर जगह पे सिर्फ नंबर आता है, फिर ये करेंसी कैसे आया? यस, बिकॉज सर डेटा टाइप चेंज किया. yes, तो इसलिए that's why importance is ये छोटे छोटे settings are already enabled for particular data types, right? So it's always better to keep it or set a data types related to Excel. Clear सबको? Okay, chalo. So first insight can be total monthly expenditure on salary is 56 lakhs, right? So this I can tell you. This is one of the insights. The next, what we can do is to find out such insights. So whatever insights which we are going to see, these are nothing but a quick insights. मतलब इनको बोलते हैं कि quick insights. Quick क्यों? क्योंकि directly by looking at the data, I can use such insights. I don't have to manipulate or do any calculations. Clear? So for this we have two methods. So there are two things here. One is sort and filter, and next one is conditional formatting. So by using these two options, we need to find a quick insights. Quick insight based on the, we'll see what is, you don't have to do any calculation or pivot table or any other functions. So let's use these functions. Before using this, you can see already यहाँ पे filter option दिख रहे हैं. Let's remove those filter option first. Not have that filter. Okay, तो मान लीजिए data format, right? Individual column को select करके there is one more data type or there is one more thing which you need to format. Mostly करते हैं जो पूरा data है, this data there is a type called, sorry, in the insert option you have option see. So जो भी आपको डेटा दिख रहा है ये this data is text, मतलब एक्सेल में सिर्फ लिखा है. एक्सेल इज नॉट कंसिडरिंग इट एज अ टेबल. टेबल मतलब क्या? जो एसक्यूएल में आपका टेबल रहता है, उस टेबल में प्राइमरी की, फॉरेन की रहते हैं और सम प्रॉपर्टीज यू डिफाइन, राइट? सो करंटली हम जो ये देख रहे हैं डेटा, इट जस्ट अ सिंपल डेटा. मोस्टली पाइथन कॉल, सॉरी, एक्सेल इसको रेंज समथिंग रेंज इट कॉल्स. सो इसका भी एडवांटेज यही है, जो भी आपको डेटा है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, एक बार डेटा अंडरस्टैंड हुआ, फॉर्मेट हुआ, उसके बाद उस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है आपको.
क्योंकि दिस इज व्हाट इज योर टेबल, फाइनल टेबल। इसका एडवांटेज बाद में है, जब भी हम कुछ रेफर करते हैं टेबल से, एवरी टाइम वी नीड टू यूज द कंप्लीट टेबल, इंस्टेड ऑफ दैट आई कैन पुट अ नेम, मतलब हर एक टेबल को मैं नाम दे सकता हूँ। क्योंकि अभी मान लीजिए आई नीड टू सिलेक्ट these 4 columns or whatever these number of rows are there. So what I need to do is I need to specify its location, right? F5 to F20 F30 ऐसे स्पेसिफाई करते हैं, राइट? मान लीजिए एक रिक्वायरमेंट है जहाँ पे पूरा टेबल चाहिए आपको, तो आप क्या करोगे? मैन्युअली सिलेक्ट करोगे, A1 जाके सिलेक्ट करोगे, राइट? बट टू अवॉइड दिस, मतलब ये मैन्युअल ड्रैग ड्रॉप, ये फॉर्मूला और सॉरी ये लोकेशन वगैरह, व्हाट यू कैन डू, ये जो डेटा सिलेक्ट किया है इसको आप एक नाम दे सकते हो, और वो नाम आप इंटर करोगे तो एक्सेल विल अंडरस्टैंड इतना डेटा मुझे सिलेक्ट करना है। सो दिस फीचर इज नथिंग बट अ टेबल। तो ये यू क्लिक एनीवेयर इन द डेटा, डेटा में कहीं पे भी क्लिक कीजिए, गो टू इंसर्ट एंड टेबल ऑप्शन, इंसर्ट में टेबल है यहाँ पे, राइट? सो यू कैन क्लिक, तो ये एक छोटा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आपका डेटा कहाँ पे है, S1 N51 तक है, वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट करता है। यू कैन सी द बॉर्डर, ग्रीन कलर का बॉर्डर आएगा आपका डेटा के ऊपर, ऐसे आ रहा है क्या, राइट? इट विल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट, डोंट वरी, समेशन नहीं लेगा क्योंकि दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द टेबल। नेक्स्ट ऑप्शन इज माय टेबल हैज हेडर्स, यस, मतलब कॉलम के नाम है ना ऊपर, राइट? ये नाम दिख रहे हैं, मैनेजर डिपार्टमेंट, सो यू कैन सिलेक्ट ओके। इससे क्या होता है, सी समथिंग चेंज्ड, ये तो पहले फॉर्मेटिंग चेंज कर देता है, देन कैन यू सी हियर टेबल डिजाइन नाम का एक नया मेन्यू ओपन हो गया है। आपके इसमें व्यू तक ही था, इफ यू ऑब्जर्व द टैब, सो नाउ न्यू टैब हैज ओपन कॉल्ड टेबल डिजाइन। अभी वो टेबल क्लिक आउटसाइड, ये देखिए टेबल डिजाइन ऑप्शन चला गया, करेक्ट टेबल, ये डिजाइन ऑप्शन आता है, दीज आर कॉल्ड स्पेशल टैब्स। तो यहाँ से आगे ऑब्जर्व कीजिए, जितने भी हम स्पेशल फंक्शन यूज करेंगे एक्सेल के, आपको नया मेन्यू ओपन होगा वहां पे, बीट, चार्ट, पिवोट, स्लाइस, मैक्रोस, बहुत सारे स्पेशल ऑप्शन ओपन होंगे। तो इससे क्या होता है ना, उस ऑप्शन, मान लीजिए अभी टेबल को कुछ मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, उससे रिलेटेड सारे ऑप्शन आपको वो टेबल स्पेशल मेन्यू में रहेगा, क्योंकि ये स्पेशल फीचर हम यूज कर रहे हैं, इसीलिए इट इज गिवन एट अस सेपरेटली देयर, क्लियर? सो इफ यू सिलेक्ट ऑन टेबल डिजाइन, आप यू कैन सी चेंज कर सकते हो, यहाँ से कंप्लीट फॉर्मेटिंग कर सकते हो टेबल का, सी यू डोंट हैव टू डू मैन्युअल वर्क, डायरेक्टली जो कलर चाहिए वो कलर सेट कर सकते हो, और वट एवर थिंग्स यू नीड यू कैन सेट, राइट? और यहाँ पे बैंडेड रो, बैंडेड कॉलम, यू कैन चेंज सम ऑप्शंस, फिल्टर बटन भी आ रहा है, मैन डायरेक्टली आपको यू आर गेटिंग फिल्टर, राइट? सो दोस फिल्टर बटन यू कैन रिमूव और ऐड। फर्स्ट कॉलम हाइलाइट करना है आपको, तो ये देखिए ये कॉलम हाईलाइट हो रहा है, ओके? इफ दैट डेटा इज नॉट इम्पोर्टेंट यू कैन ऐड, देन बैंडेड रो एंड कॉलम, ये थोड़े हाईलाइटिंग रिलेटेड ऑप्शंस है, राइट? हेडिंग रो, ऊपर हेडर है कि नहीं उससे रिलेटेड है। नॉट ओनली दिस, ये पूरा टेबल आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, और देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, डायरेक्टली आपको मिलता है रिमूव डुप्लीकेट्स, टेबल में जितने जितने डुप्लीकेट्स है, ये सिंगल बटन क्लिक करने से यू कैन रिमूव द डुप्लीकेट्स। आपको कुछ फंक्शन नहीं लिखना है, मैन्युअली कुछ फॉर्मूला नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली यू कैन क्लिक द बटन, रिमूव द डुप्लीकेट्स, ओवर, clear? This is the advantage of using table, and few more, ये देखिए this is the table name, table 1, whenever I refer table 1 excel में कहीं पे भी मैं टाइप करूंगा table 1, it will refer to this data, मतलब इस डेटा को रेफर करेगा, क्लियर? So some headers are not looking good, so let me change the font। होम में जाके फॉन्ट कैसे चेंज करना, पहले दिस बेसिक मेन्यू शुड आई एक्सप्लेन, और सबको पता है क्योंकि
because it's a word वगैरह आपने Yes, sir. all as in ये देखिए टॉप बॉटम बोल्ड करना है तो बोल्ड फॉन्ट कलर यहाँ से मैं कलर सेट कर सकता हूँ राइट ब्लैक रेड ये देखिए आई वांट टू सेट अ ब्लैक आई कैन मेक इट ब्लैक रेड करना है तो रेड सो बेसिकली फॉर्मेटिंग रिलेटेड ऑप्शंस है मेक श्योर आप अप्रोप्रिएट कलर यूज कर रहे हो नॉट रेड वगैरह कहीं पे भी यूज करना इज नॉट अ गुड साइन क्योंकि रेड indicates danger, right? Something is loss making danger. Green indicate profit. So ये छोटे छोटे color related few things you should be aware of. As in जब भी आप कुछ पॉजिटिव दिखाना चाहते हो उसको ग्रीन कलर में दिखाना है नेगेटिव दिखाना है तो उसको रेड कलर में दिखाना है राइट clear so this is the table and one more thing is see whenever I scroll down मेरे heading ऊपर चले जाते हैं in the column these things ये नॉर्मल डेटा में नहीं होगा मान लीजिए आपको नॉर्मल वापस डेटा कन्वर्ट करना है यू गो टू टेबल डिजाइन देन देयर इज ऑप्शन कॉल्ड कन्वर्ट टू रेंज क्या करता है टेबल के सारे प्रॉपर्टीज को हटा देता है सिलेक्ट ओके चला गया इवन दो इफ यू क्लिक एनीवेयर आपको वो टेबल डिजाइन टेबल वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है सो दिस इज बाय द वे कलर वगैरह वैसा ही रहेगा you cannot change the color एक बार कलर सेट हो गया तो manually you need to remove the options right so sorry so this is the option available here sorry next control Z okay so table next जैसे automatically यहाँ पे filter आ रहा है right filter options available I can manually also do it कैसे data tab में क्लिक कीजिए click on data you will see the filter option here यहाँ पे filter के ऊपर क्लिक करने से हर एक कॉलम के ऊपर फिल्टर आइकन दिखेगा क्लियर ऑन ऑफ देखिए राइट नाउ सपोज आई गिव यू फिल्टर तो फर्स्ट इनसाइड कैन बी मान लीजिए मैं सीटीसी जो मेरा कॉलम है उसके ऊपर हाईएस्ट टू लोएस्ट करता हूँ राइट देखते हैं सबसे ज्यादा सैलरी कौन ले रहा है राइट सो दिस वी कैन सी मतलब टॉप 3 सैलरीज whoever is taking the top 3 salaries we can mention तो just observe based on the operations क्योंकि CTC सबसे ज्यादा केस में है you can say operation department not in top 3 4 5 जितने भी है you can mention highest salary is paid in the operations department top 10 और maybe you can mention कितने top है वो देख सकते हो top 10 salaries being paid in the whichever operation department right then you can say how much percentage of this इसका परसेंटेज भी आप निकाल सकते हो मतलब टोटल जो टोटल 54,000 56,000 आ रहा है इसमें से टॉप 10 लोगों को कितना जा रहा है मतलब 56 लाख तो सैलरी है बट उसमें से 20 लाख तो सिर्फ 10 लोग ले रहे हैं और बाकी के 40 लोग सिर्फ बचा हुआ 20 लाख में डिवाइडेड है दैट्स कॉल्ड मतलब इक्वालिटी नहीं है वहां पे राइट मतलब एक आदमी अंबानी है दूसरा डायरेक्ट गरीब है तो इन बिटवीन देयर इज नो बैलेंस so that you can do but you need to use a pivot table for that but not an issue मतलब हम देखेंगे इसके बाद how to use the pivot table and the percentage wise analysis but यहाँ से quick insights ये निकाल सकते हो कि you can say total number of CTC कितना है there is one more interesting thing पहले तो ये sum आपने बोला है first time can be a sum then top 10 top 5 top 10 salary ये बोल सकते हो then you can say the gender wise matlab there are mostly highest salaries being paid to the gender male लोगों को ही दे रहे हैं right so currently if you see gender equality or some movement is going on जहाँ पे equal pay वगैरह जहाँ पे people like male and females are being treated equal and they are being paid equal salary so उससे रिलेटेड आप एनालिसिस कर सकते हो एज इन हाईएस्ट टॉप 5 में ओनली वन फीमेल एम्प्लॉय इज देयर
who is getting paid more salary. तो इससे maybe they can think कि how we can equal the both the party, how we can equal the pay or responsibility share करना. So all those things are possible, right? So this can be one of the insights. मतलब ये insights हो सकता है. और ये सारे insights से मान लीजिए if you want to take a decision, आपको कुछ you need to reduce a cost. इस साल का आपका profit कम हुआ है. So what action you can suggest? जो हमने ये 2-3 पॉइंट्स बोले उससे ऊपर. this operations department ना उसमें ज्यादा सैलरी देते हैं तो वहाँ पे ना मतलब उसके जो एम्प्लॉइज है वहाँ भी कम. Yes, so that can be one of the option because top 5, top 10 employee, highest paying employees are from the operation department. So we can reduce the head count from the operation department, right? क्योंकि उससे salary your total expenditure will come down. Clear? So this can be one of the way. So not only this, what if I want to find out numbers who are greater than average or average salary, average से ज़्यादा salary किनको किस employee को मिल रहा है. So there is an option, one more option in the quick insight is called. By the way, sort and filter में यही options है अलग अलग. You can use sort highest to lowest, lowest to highest. There is next option which we can explore to find out some insights is called a conditional formatting. तो ये देख सकते हैं conditional formatting यहाँ पे. So this option is available in the home tab. Click on the home tab, go to conditional formatting. Once you click on the conditional formatting, आपके पास अलग-अलग options हैं. Right? Manually ढूंढना is bit difficult. So what conditional formatting does is it highlights the cell. मतलब ये color code कर देता आपके data को. उससे क्या advantage है? You can easily find out some relation or directly identify कर सकते हो. Let's go with one by one. Highlight cell rules. Okay. So if I click on that, I will get one more menu. So it says greater than, then less than, between, equal to, text that contains. मतलब मान लीजिए ऐसा कोई text ढूंढना है. I want to find something. There is a name and I want to find out how many Akshay are there in my organization. So I can use that text that contain Akshay, Eki, whatever Akshay, and then or date occurring or duplicate values. Let's use simple one. So or is there any duplicate data? Okay. Because डिपार्टमेंट में सारे ही डुप्लीकेट्स है राइट अलग अलग सो इट माइट हाईलाइट एवरीथिंग बट क्लिक ऑन दिस हाईलाइट सेल रूल्स डुप्लीकेट वैल्यूज नाउ इट मार्केटिंग भी डुप्लीकेट है फाइनेंस भी डुप्लीकेट है दैट्स व्हाई इट इज हाईलाइटिंग just a second any number okay maybe we can use if we want to find out duplicate values here so conditional formatting highlight cell rules click on duplicate values okay यहाँ पे भी mostly duplicate है मतलब duplicate means 13 13 so it highlights both experience check on the experience okay yeah this is now appropriate see 40 एक ही बार आ रहा है so that's why it has not highlighted 50 not highlighted but 34 आ रहा है नीचे देखिए so it has highlighted 24 24 है right 32 32 है so whenever you have repeated data आपको repeated data और duplicate data identify करना है directly you can use the conditional formatting clear okay so now ये format हो गया but how to remove this delete कैसे करना है should I delete this cell मैं delete करूंगा तो पूरा data delete हो जाएगा right तो ये remove करने के लिए whenever you do some any formatting remove करने के लिए click on the conditional formatting नीचे दिख रहे these are called the rules new rule
क्लियर रूल एंड मैनेज रूल। जो हमने अभी रूल बनाया जहां पे भी डुप्लीकेट है उसको रेड कलर में दे दो। सो दैट रूल यू कैन मैनेज यूजिंग यहाँ पे मैनेज रूल्स। क्लिक ऑन दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखिए यू कैन सी इट हियर। रूल का नाम क्या है? डुप्लीकेट वैल्यूज। किसके ऊपर फॉर्मेट ऐसे करना है? कहाँ पे अप्लाई है? F2F मतलब F कॉलम पे अप्लाई है, राइट। सो इफ यू वांट टू डिलीट एनी, चेंज कलर करना है, क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। देखिए यहाँ पे भी कलर कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाके यू कैन सिलेक्ट सम नंबर। कलर में एक दूसरा कलर देना है आपको, कुछ ब्लैक करना है, येलो करना है, ऑरेंज करना है, सो दैट यू कैन सिलेक्ट। ओके, प्रेस ओके। देखिए कलर चेंज हो गया, राइट। सो इफ यू वांट टू क्लिक ऑन द फिल, यहाँ पे बहुत सारे एडिट रिलेटेड ऑप्शन है। मतलब ये रूल को कैसे एडिट करना है एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन डू। फिल में जाके यू कैन चेंज द कलर। आपको पिंक नहीं चाहिए, इफ यू वांट टू पुट अ डार्क कलर यू कैन सिलेक्ट ओके, देन ओके। अप्लाई करने के बाद यूजिंग चेंज्ड, राइट। फॉर्मेटिंग रिलेटेड ऑप्शन सब कुछ अवेलेबल है इन द मैनेज रूल्स में। मैनेज रूल्स में आप फॉर्मेट कर सकते हो। इफ यू डोंट वांट, आप डिलीट कर सकते हो यहाँ से। देखिए दिस डिलीट रूल ऑप्शन इज देयर, ओके। एंड देयर आर फ्यू मोर ऑप्शंस सच एज क्लियर भी कर सकते हैं। आई कैन यूज क्लियर रूल्स ऑप्शन यहाँ पे। क्लियर रूल्स ऑन दिस कॉलम, दिस शीट, यू सी दिस कॉलम, दिस शीट, अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। सिलेक्टेड सेल का चाहिए, शीट का चाहिए, टेबल का चाहिए, so all those options you can see. I will select entire sheet, clear. Okay, my rule or formula cleared now. So we'll see the next one, which is highlight cell rule greater than. Let's select the data first. By the way, you need to select the data. So suppose ये पूरा data में कर दिया, right? CTC का. And then conditional formatting, select highlight the cell rules greater than. greater than में क्या होगा? मान लीजिए मुझे फाइंड आउट करना है ऐसे लोग जिनका सैलरी ग्रेटर देन 1,20,000, तो मेंशन कीजिए। ये देखिए ग्रेटर देन 120,000। और ऐसे लोगों को मुझे क्या करना है? रेड करना है, ग्रीन करना है, येलो हाईलाइट करना है, लाइट रेड करना है। सो आई कैन सिलेक्ट हियर, प्रेस ओके। देखिए तो इन दिस कॉलम ओनली people with greater than 1.20 lakh का सैलरी हाईलाइट। So you can use this function as well. मान लीजिए कुछ आपको इंडिकेट करना है whether a particular greater than this, less than this, you can indicate. So again I can select this or clear rules something. Okay, I need to clear rules क्योंकि इसी के ऊपर अभी current situation में I have only one column, that's why to show. In real you can use multiple column, multiple formula एक साथ रख सकते हो, ऐसा नहीं। But only thing is वो एक ही कॉलम मेरे पास अभी दिखाने के लिए, that's why I'm clearing the rules. So select the column, shift control data, and then select other less than or equal to. You can select the less than 20,000, 10,000, 50,000, जो भी आपको फिगर देना है, that you can choose. Less than 50,000, right? You can select if anybody is there. Okay, nobody is there. 50, minimum 70,000 है, so less than 90,000 कर सकते हो आप, right? Less than 90,000, right? And then select the light red color, press OK. It is not taken. Why? Can anybody tell me? And then if I want to edit, क्या है ऑप्शन? हाउ टू एडिट दैट रूल, मतलब वो गलत हो गया तो मैनेज रूल्स, राइट? यस, मैनेज रूल्स। क्लिक हियर। ये देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है प्रॉपरली, सेल वैल्यू लेस देन 9,000 है तो यू कैन फॉर्मेट, राइट? सो क्लिक ऑन दिस, डबल क्लिक करके ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एडिट कर सकते हो आप। देखिए कैन आई सी इट हियर? और लेस देन, यहाँ से बहुत सारे पैरामीटर आप सेट कर सकते हो। नॉट ओनली दिस, you can set lot more parameter, less than, greater than, equal to, right? Not equal to, all the mathematical और logical comparison यहाँ से कर सकते हो।
if you want to do any logical comparison based on 50,000 to 70,000 or 90,000 to 1.20 lakh, जो भी salary है, that you can select from here. Clear? Okay. You can see the cells highlighted, right? Okay, made some mistake, but clear the point. All the logic related, you can highlight the cells. So next one rule which we are going to see in the conditional formatting, that is quite interesting. Let me clear this. So next आप जो देख रहे हो, this is called bottom rules. ये देखिए click, और यहाँ पे you can directly select top 10 items. जैसे हम sort filter करके top 10 select कर रहे थे, here you can directly use. You don't even have to sort filter, ऐसा कुछ नहीं करना है. Not only this, top 10 percentage of items. Percent मतलब मान लीजिए the you can calculate the percentage, total percentage, और उसमें से top 10 students, as in if I want to give you an example, GATE, CET वगैरह सब example में percentile system रहता है, 99%, 80%, right? तो वो क्या करता है, टोटल अमाउंट के ऊपर परसेंटेज निकालता है, एंड देन टॉप 10% में कौन है, इट इंडिकेट्स. So that's how we'll see with one more example, but currently we'll indicate CTC. CTC पे एक बार top 10 कर सकते हैं आप. Top rules, top 10 item, top 10 में I want 5 only. अब ये top 5 है, तो let me indicate with the green color. Okay, clear सबको? And then press OK. ये देखिए directly okay, हमने data sort किया है, that's why you find it easy, but मतलब if you are not sorted, आपने data sort नहीं किया है, तो you will get proper वो बीच में जो भी values है, you will find those values separately. Okay, top we have not selected 10, we have selected only 4. If you clear manage rules, you see, sorry, top 5, press OK. है क्या top 5? Something is missing, you can check whether what is top 5, और हमने कुछ filter लगाया है. Okay, not a filter. Okay. क्या हुआ है? So what I did is I selected the entire column like this. When I select all the top, नीचे देखिए हो गया. That's why data appropriately select कीजिए so that you will get a proper result. So let me clear the rules. Right? So or if there's one more thing, ठीक है, sales related एक table है, we have in the sales table. कल जो हमने डेटा देखा ना, उसमें you can find out, आज के लिए आपको होमवर्क है, जो हमने कल डेटा सेट देखा था सुपर स्टोर का ट्रांजैक्शन रिलेटेड, उसके ऊपर you need to do all these things, और इसमें बहुत प्रॉपरली आपको दिखेगा. I will give you an example. मान लीजिए सेल्स कॉलम है मेरे पास, राइट? लेट मी रिमूव एनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स. ओके, ये कल हमने देखा था, राइट? ये सुपर स्टोर का डेटा, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट, सेल, क्वांटिटी, डिस्काउंट. तो आपको ये एज अ होमवर्क है, यू नीड टू डू डेटा अंडरस्टैंड तो किया है, डेटा फॉर्मेटिंग करना है आपको. क्लियर? एंड देन क्विक इनसाइट्स के कई few insights you need to find it out, मतलब find out करना है आपको थोड़े insights इसमें से. So here you will get a better result. Check किया है, okay? And then I will use conditional formatting, top 10 items, इसमें से 5 items कीजिए, और इसको green color ना, sales है, highest sale हम select कर रहे हैं top में, so it's green, press OK. Just a second, or some filter I have applied.
manage. Okay, this is the top one. Click, select top 5. Not only top, bottom भी select कर सकते हो. यहाँ से देखिए bottom आपको select करना है 5. You can select, apply. Okay, देखिए this has to be a red, but bottom के values you can select. So यहाँ से और if you want to highlight all the other rules such as ये देखिए रिमेनिंग परसेंटेज में यू कैन ऑब्जर्व हियर, मतलब टोटल वैल्यू लीजिए, उस टोटल वैल्यू का 10% निकाल के जितने भी वैल्यूज उसमें आएंगे दैट विल बी योर रूल. और वन ऑफ द इंटरेस्टिंग मतलब मोस्टली हम जो यूज करेंगे दैट विल डेटा सिलेक्ट कीजिए एंड आपको एवरेज सेल कहीं पे भी होगा उससे ज्यादा वाले वैल्यूज इंडिकेट करना है, एवरेज से ज्यादा. तो कैसे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग. टॉप एंड बॉटम में देयर इज थिंग कॉल्ड बिलो एवरेज एंड अबव एवरेज. मतलब मान लीजिए स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, आपके पास मार्क्स है, डायरेक्टली ये ऑप्शन सिलेक्ट करके एवरेज से ज्यादा कौन से स्टूडेंट है आप इंडिकेट कर सकते हो, राइट? क्लिक ऑन द अबव एवरेज वैल्यूज. आपको ना एवरेज ढूंढ, you don't even have to calculate average or anything like that. Above average, click above average वाले excellent green color, press OK. See, तो ये लोग above average है. Average क्या है I don't know और मैंने calculate भी नहीं किया, but I can identify the number of people who are in the average. And इसके बाद if I use filter, click on the data and use filter, okay, I can filter with colors. ये देखिए filter using colors. Click on the colors and then click here. I got a list of the student जिनका मार्क और एवरेज से ज्यादा है, और I got a list of product जिनका सेल्स एवरेज से ज्यादा है. Did I use any formula? एक्सेल का कोई आपने फॉर्मूला यूज किया? एवरेज, काउंट? No, right? So this is how you should use all the available options in the Excel. Not only this, ये आप select करोगे, there's one thing here at the bottom, आपको ये पूरे automatically मिल जाएगा. Average, count and sum. Average क्या है? अभी इन लोगों का एवरेज इतना है 4333, बट टोटल डेटा का भी एवरेज आपको मिल जाएगा डायरेक्टली फ्रॉम द बॉटम. सो क्लियर? सबको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज करना है, फिल्टर कैसे, सॉर्ट कैसे. सो विल बी एबल टू फाइंड आउट इनसाइट्स. मतलब सुपर स्टोर ये सेम डेटा सेट आपको डे 2 डे 3 मिलेगा. ओके, यू कैन यूज दैट डेटा सेट और ये डेटा सेट यूज कीजिए. वी डोंट हैव एनी इशू. ओनली थिंग इज यू शुड कम अप विद एटलीस्ट 2 से 3 insights, so you can definitely come more than 5, but at least 1 or 2 actions. मतलब as a business owner what action you can suggest, मतलब as a business owner को आप क्या input दे दोगे, so that at least you should come up with. Clear सबको homework? Yes, sir. Understood? Okay, and I want insights on the HR as well. जो ये HR का data set है, इसमें I want some insights और additional कुछ कर सकते हैं कि आप देखिए इसमें. I will discuss the point tomorrow. थोड़ा इस पे डिस्कस करेंगे and then we'll move to the next topic. But understand इसमें और क्या कर सकते हैं. So I want homework की सुपर स्टोर का जो डेटा है उस पे insights चाहिए and actions, और इसमें additional insights, मतलब other than this data can you come up with something extraordinary or something out of the box. Okay, so good everyone. So I know थोड़ा extend हो गया है, but okay, not an issue. होमवर्क क्लियर है? बाय द वे सब लोगों ने डेटा डाउनलोड किया? एवरीवन गॉट द गूगल ड्राइव फाइल लिंक एवरीथिंग? सो प्लीज डू फॉलो. No, sir. Yeah, any question? Yes ma'am. So are you in the group DA9? No, it's a DA7 and 8. Okay. Okay ma'am, you can send me a message. I will post it in the group, or else today I will post it in the group DA6, 7 or something. Okay, sir. Okay. ठीक है. Any questions? If you have any question, you can reach to me on WhatsApp.
आप WhatsApp का number I am in the group, right? So already in the group you can find out my number and you can text. So with this, thank you. Thanks a lot. Chalo.